What a wonderful world. What a wonderful world. The one who always used to say, मुझे तो मेकअप आता नहीं, मैं तो मेकअप करती नहीं हूँ. Look who is in the makeup today. Hi guys, it's Khyati here and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and are safe at home. So today's video is on a very personal note. So in today's video, I will be sharing some random facts about me. It might be random, it might be weird, it might be funny as well. So if you're interested, then please keep on watching. And without any further ado, let's get started. First of all, please ignore the construction noise. My neighbor got literally no chill. They are making this irritating noise subha se hi. So I just want you to ignore the sound. So let's start with the very first fact about me. That is, my nervous habit is biting my nails. So whenever I got nervous or whenever I'm sad, you can say, I started biting my nails. इसलिए मेरे right hand का nails are in a very bad situation. So that's a weird fact about me. I started biting my nails whenever I got nervous, whenever I'm sad or time pass के लिए भी. So it's a fact about me. Let's move on to the second fact about me. That is, I hate lizards. So I think this is also the reason why my sister started calling me Chipkili. So I literally hate lizards. पता नहीं क्यों वो जब मेरे सामने आता है, I started screaming a lot. But that's a weird fact about me. I hate lizards. So let's move on to the third fact about me. That is, I am a stomach sleeper. So whenever I go to my bed, if I am sleeping on my back, I will not sleep. Like 1 घंटे निकल जाए, 2 घंटे निकल जाए, पूरा रात ही क्यों ना निकल जाए, I cannot sleep. But the minute I will turn on my stomach, I will fall asleep. Like in just 4 or 5 minutes. Okay, so let's move on to the next fact about me. That is, I have a nausea issue. So if there is something which smells bad is kept around me, I started sneezing so hard. That's why I kept an inhaler in my pouch. Wait, I will show you. This is the inhaler that I always kept on my pouch. This is my pouch, just by the way. This is always with me. Whenever I started sneezing, I smell it so that I can feel something good. And this is by Patanjali and I love... Okay, this is the next fact, okay? I will tell this one after this, but let me complete this one. So this is from Patanjali and ये इतना सा bottle है and मैंने half bottle खत्म ही कर दिया. I always keep it in my pouch. मुझे अगर headache भी होता तो मैं इसी को use करती हूँ. So yeah. Let's move on to the next fact about me. I already said half of it, that I love Ayurvedic things. And maybe this is also the reason why we generally buy everything from Patanjali. So मेरे साथ ये situation है ना, I always need organic thing or natural products so that it can suit on me. Okay, so let's move on to the next fact about me. That is, oh my god, it's so cute. I love teddies. So in my previous channel, some people may know Puchu. It's my teddy. I got him on my birthday and I named him Puchu. Coincidentally, he's not around me, but I will definitely gonna pop the picture over here of me and he. Okay, so coming back to the topic, I literally love teddies a lot, like as hell. Not only Puchu, okay, all the teddies. Like मुझे कोई भी टेडी मिल जाए मैं बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती हूँ टेडीज के नाम पे. जो टेडी का जो फेस होता है ना, इट मोटिवेट्स मी टू स्माइल. लाइक अगर आप कोई भी टेडी को देखते हो तो वो हर टाइम स्माइल करता रहता है, राइट? एंड दैट इज अ थिंग विथ मी. व्हेनेवर आई एम सैड, आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ माई टेडी. इट्स वियर्ड बट इट्स द ट्रूथ. I love my Puchu. I love all the teddies. And yeah, so let's move on to the next fact about me. That is, I smell everything before eating it or using it. So this is... They are making so much of noise. So it's a very weird kind of thing in me.
मुझे कुछ भी खाने से पहले उसको स्मेल करना जरूरी है। एंड इतना तक ही बस नहीं है, अगर वो अच्छा स्मेल नहीं कर रहा होता ना, मैं ना ही उसको खाती हूँ और ना ही उसको अपने बॉडी पे अप्लाई करती हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी। आई गॉट आइडियाज इन माई ड्रीम्स। So it's a very unique thing in me that I literally got all the ideas in my dreams. So the intro, इस चैनल का जो इंट्रो था, उसका पूरा जो माइंड मैप होता है ना, वो मुझे पूरा मेरे ड्रीम्स में आया था। लाइक व्हाट आई हैव टू वेयर, व्हाट मेकअप आई हैव टू कैरी। लाइक इट वाज अ वेरी थोड़ा मोड़ा मेकअप जो कैमरा में दिख भी नहीं रहा था, बट मैंने जो भी किया था वो सब मुझे ड्रीम्स में आया था। एंड द वे आई वॉज पोजिंग ना, वो सब मैंने मेरे सपने में देखा था। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो गेट द ड्रेस का डिसीजन। लाइक वेन एवर आई हैव टू गो टू एनीवेयर, I can literally see what I have to wear the next day, and I am a kind of person. Wait, so this I will tell in the next fact. ऐसा क्यों लग रहा है मुझे एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट मिले जा रहा है, बट दैट्स द थिंग विथ मी, आई गॉट आइडियाज इन माई ड्रीम्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी. As you saw, I already said half of it. So I am a kind of person who can't decide my outfit on the last moment. Like, no, I can't decide. Even though I can't take a decision on the last moment, मुझे किसी भी चीज के लिए ना प्री प्लानिंग करनी पड़ती है. Let's move on to the next fact about me, which is I love collecting memories by clicking pictures. So some people call me phone addictor, some people call me camera addictor, and some people also call me selfie lover. So that's not me. मुझे उतना सेल्फीज लेना पसंद नहीं है, बट मुझे मेमोरीज कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कल क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं है, तो हम आज सेलिब्रेट करते हैं, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, एंड इट्स माई फेवरेट. आई डू शेयर एवरीथिंग विथ माई मॉम एट नाइट. सो जब हम लोग के ऑफलाइन क्लास चल रहे थे ना, उस टाइम पे तो ऐसा होता था, स्कूल के जितने भी बातें होती थी ना, मैं रात में डिनर करने के बाद मम्मी को सब बताती थी. बट अभी हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया, राइट? एंड ऑनलाइन क्लास में उतना कुछ होता नहीं बताने को. इसकी वजह से लास्ट ईयर मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे अलोन फील होने लगा था. लाइक मैं ऐसी हूँ ना कि मैं अगर किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ ना, तो मुझे खुद में डिप्रेस्ड, अलोन टाइप का फील होने लगता है. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, I do share everything with my mom at night, and I love sharing everything with her because she understands me so well. Like no one can literally understand me like that. So yeah, let's move on to the next fact about me. So I am a straightforward person. Let me explain myself with an example. If someone is being rude with me and I feel like his or her behavior is not good in front of me, I just tell them on their face that, look, whatever you are doing is not at all good. I am not going to deal with your shit. So that's why some people also hate me for this. But never mind, that's me, that's what I am in real life. So let's move on to the next fact about me, that is I love cooking. I freaking love cooking. Last year I learned a lot of things from Mama. Obviously, she is the only one who can teach me good recipes. I am expert in experimental cooking, huh? Not every time, but most of the time मेरा experimental cooking सक्सेस होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि खराब भी हो जाता है. एक बार मैं YouTube से देख के एक मैगी का रेसिपी बना रही थी. No one will gonna trust this, but प्याज जल गया था. So that's a thing with me. I love cooking. So let's move on to the next fact about me. I love TMKOC. If you don't know, it's तारक मेहता का उल्टा चश्मा. So main two characters मुझे जो पसंद है ना, वो है जेठालाल and दया भाभी. और ये दो अगर शो में ना हो ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं देखना ही बंद कर दूंगी. अभी दया भाभी नहीं है तो न्यू शोज देख के उतना मजा भी नहीं आता है, इसलिए मैं पुराने शोज ही देखते रहती हूँ. आई लव TMKOC. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट फैक्ट अबाउट मी. आई लव ओल्ड मूवीज लाइक DDLJ, K3G, that is कभी खुशी कभी गम, and DDLJ is दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम साथ साथ हैं, and also Viva. Like these four are on the top. So whenever I go to my natives, me and my cousins together always watch हम साथ साथ हैं, क्योंकि मेरी एक दीदी के लैपटॉप में हम साथ साथ है डाउनलोडेड है. ओके, सो हम लोग वो देखते ही देखते हैं, और हम लोग विवाह देखते हैं. ओके,
So this is the thing with me. I love old movies. So yeah, I think that's it for today's video. I really hope you guys enjoyed watching this video. I know it was on a very personal note, but I love filming this video and I know I will also love editing this video. So thank you for watching this video till here. If you enjoyed watching this video, then please give this video a big thumbs up. Do comment and also share it with everyone you know, and also do subscribe and press that bell icon so that you will never ever miss any video of mine. And yeah, I will see you in my next video. Until then, stay positive and stay happy. Bye.